And that is one of the biggest problem if you are not a good listener. You have to be a good listener, to be a good speaker, to be a good orator, to be a good influential person, to be influencer, to be a great businessman, and to be something special in your life. You have to be good listener. तो आज की एक्टिविटी का हमारा एक बात बताइए आप लोग कि क्या एक बोलना इनफ होता है या फिर एक प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए? टेक्निक्स अभी इसमें से गुलाब की वो लिखिए मेरे And you can also have a good wish for this year. ये सब जा रहा है May your efforts lead to your success. So he sent us to roam around and to sell a product to have a personality development or a sales skills to grown up. Unfortunate. No worry, but that is still. I know. Thank you for the interaction, although. And I'm from Happiness Institute. Where are you from? I'm from Grace, but I'm really tired. Sorry. Ma'am, just we need your 5 minutes just. Cost price, because it's a task which is given by our sir, and just I'm selling this. And sir, it's a band. The benefit of this band is a very powerful band. Okay, it's remove your all the negativity of your life. It's also help to remove the problem of your life. Only I come here and I convince this family to take a rose from me, and they convince. Not easily, but I tried. जिनका मकसद मतलब है अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, अपने इंटरव्यू स्किल्स को इंप्रूव करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना. And that is why we are here making our students present in front of so many strangers and so many unknown people so that we can come to know that are they building their confidence or not? Are they developing their confidence or not? And that is very, very important. भाई का सवाल है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस क्यों आता है, राइट? अब जवाब सुन लो आराम से कान खोल के. इसीलिए गणेश जी के पास कान खोलो और दिमाग को सही करो. तो जवाब ये है, कॉन्फिडेंस कुछ भी हो, किसी भी भाषा में हो, वो कॉन्फिडेंस होता है. डांस करने में भी कॉन्फिडेंस है, सिंगिंग में भी कॉन्फिडेंस. आई थिंक तुम कुछ बेच रहे हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए. बेच रहे हो ना, तो तुम कपड़े बेच रहे हो, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस चाहिए. और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कपड़े बेचने का कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास पढ़ाने का कॉन्फिडेंस. एक रिसर्च हुआ, डेल कार्नेगी फाउंडेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया. उसमें पाया कि 75% ऑफ द पीपल और 77% ऑफ द पीपल आर हैविंग ग्लॉसोफोबिया. तो ग्लॉसोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ प्रेजेंटिंग, फियर ऑफ प्रेजेंटिंग, फियर ऑफ कम्युनिकेशन और फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. अब देखो क्या होता है, जैसे कोई चीज आती है तो हमारे पास दो कान है, एक तो लिया, समझ रहे हैं ना आप लोग, एक लिया एक छोड़ दिया. अगर लिया तो ठीक है, छोड़ दिया तो हमारे पास ज्ञान आ नहीं रहा है. इसीलिए हमें कहा जाता है कि भाई जब किसी को आप सुनो तो कैसे सुनो? दोनों कानों से. अब गणेश जी का एग्जाम्पल लो, बड़े कान है, बड़े कान क्यों दिए? सुनो अच्छे से, राइट? अब भाई जी मान लो कपड़े बेच रहे हैं, कपड़े अपने लिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट वो सुनने के लिए राजी नहीं है. और दुनिया ऐसी होती जा रही है. Nobody is ready to listen to anyone in the world. Everybody thinks that he or she is the superstar. And that is one of the biggest problem if you are not a good listener. You have to be a good listener, to be a good speaker, to be a good orator, to be a good influential person, to be influencer, to be a great businessman, and to be something special in your life. You have to be good listener. तो आज की एक्टिविटी का हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य है, ये सब हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के, जिसमें हमने एक प्रोग्राम रखा है. प्रोग्राम का नाम है विजन या प्रोजेक्ट वैल्यूएशन. अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्लान करते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, राइट? कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई प्लान करते हो, उसकी वैल्यू क्या है? एंड व्हाई विल पीपल वैल्यू दैट? पीपल उसकी वैल्यू करेंगे क्यों? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That's very important to create and generate a value of any product, any vision, any mission, any idea, any creativity, any innovation, any power, anything, whatever is in your mind. And that's very important. If you don't have the valuation and the value of that product, it's useless. So what you have to do? You have to create and generate the value. You have to create and generate the. इस सेशन को हम as a trial session, as a demo session रख रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है. You have to present yourself. यहाँ पे आधे अगर आपके लोग हैं तो आधे बाहर के लोग हैं. आधे अगर आपको सुन के अपना दोस्त मान के ताली बजा रहे हैं तो आधे लोग आपसे थोड़ा सा मुकरेंगे भी और आपको नजरअंदाज भी करेंगे, कहेंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या कर रहे हो देखी थी लेकिन लेक्चर नहीं देखा था. अभी तक हमने जो है कि
झूम बराबर झूम शराबी, नोरा फतेही का दिलबर और साकी साकी रे, हमने डांस देखा था। लेकिन अभी एजुकेशनल बातें हो रही है, अवेयरनेस की बात हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। ऐसा इस सीपी के अंदर, सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस में ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कभी। और हम ऐसी चीज क्यों देखें? क्योंकि जो चीज यहाँ पे होती नहीं। And that is what I want to say, that today we are not here for Thumka Lagaila. We are here for just, improving ourselves, and we are here to develop ourselves, right? So today our students have some vision, some mission, some product, some creativity, some knowledge, some information which they want to present in front of you all. And why they want to present in front of you all? Because they want to show that if they can do it, you can also do it. And if they want to do it, of course they can do it. Right, everybody? So today we are conducting this session for the purpose of actually increasing the value and talking about the value of something. For example, if something is sold, like if you go at CP outside of the Central Park, you will find many brands. You will find many showrooms. Why they are there showrooms? Like you find Bada, you find Van Heusen, you find Peter England, you find, Zara, you find multiple brands like KFC, you find McDonald's, you find Burger King, and you find multiple brands. Why they are brands and opening their lakhs of showrooms and they are selling something? Because they have created value. There is Nano car and there is BMW. There is Mercedes, there is Rolls-Royce. Why they have the value? You have to understand. And they have created the value among the consumers, and that's why they are going to create the value among the consumers. Hope you're ready, everybody. Whenever we love someone, whenever we think that he is my very special person, we just take this rose and say that I love you so much. So my dear friends, I want to ask you one thing. Do you know why we always consider this red rose is the symbol of love? क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इस लाल गुलाब को ही क्यों प्यार का सिंबल माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि लाल गुलाब ही प्यार का प्रतीक है? Is there anybody who can tell me that why only this rose is the symbol of love? Is there anyone who can tell me? Ladies and gentlemen, if you know, you can tell me. But we always consider that this red rose is the symbol of love. So ladies and gentlemen, just note I'm going to give you this flower, but also I will tell the story. History, what is the history behind it? What is the history? So my dear friends, there is a story in Greek. There is a story in Greek. Aphrodite. Aphrodite is the goddess of Greek. She is considered a symbol of love. Aphrodite's beauty, intense and magical. She was so beautiful. Whenever the way she went, roses grew there. And that's why this red rose is considered, this is the symbol of love. And there is, apart from that, this is also one of his story. Greek god Adonis. He once upon a time, he went for hunting. And he was killed by wild boar. And his blood started bleeding. And there one white rose also there. And that white rose turned red rose with Adonis' blood. And since then, we considered this red rose is also the symbol of passion and struggle and sacrifices. So this is the history behind it. So you must know what is the history behind it. Just you take the rose and you just propose someone. Not. You must know what is the history. It's very important. That's what I'm going to tell you. And one thing is that you have known what is the history behind it. So just, why can't you buy it? Because this I'm just giving you in just 50 rupees. Oh my It God. price just 50 rupees. No customer is there. You can take, and if you have any special person, if you have your loved one, it may be your parents, it may be your brothers, it may be your sister, it may be your friend, it may be your girlfriend, it may be your crush. Just take it and go to them and say, I love you so much. And after then, you can show your love. You can show your dedication. You can show your feelings. You can show your emotion. You can show your bond. And you can show your connection. What is connection? And you can prove that, yes, I love you so much. And no one is in this world like me. I love you so much. And that time your partner feels, yes, this is the person. He is very special. And he or she forgets all his worries or her worries, and they will be happy. And that time
they will think that, yes, this person is amazing. This person is marvelous for me. This person is very special for me. He or she thinks about me. He cares me or she cares me. So just if you want to take, you can take. I'm giving you just in 50 rupees. You please, and if you are thinking that it's so expensive, so I want to tell one thing. You know, Shah Jahan built Taj Mahal for his wife, in the memory of his wife. So you cannot buy just a 60 rupees rose for your loved one. It's not so expensive. So Abdul Rahman is your customer, by the way. So how much is this? Just 50 rupees. 50 rupees. Yeah, just 50. Thank you. इफ आई एम वर्किंग तो मेरे लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस की बात बहुत है कि कॉन्फिडेंस। मेरे को डेली मेरे पे मिलना और उनसे कंफर्टेबल करना। अच्छा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्रेजेंट करा, तो आप में से कौन कौन वेरी मच कॉन्फिडेंट है कि वो पूरी गैदरिंग के सामने बोल सकता है? ऑल ऑफ द, जैसे वो मनदीप लड़का का नहीं, इनसे हट बोला। में से हमारे में से बोल रहे। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है सर। ओके ये इन जनरेशन के लिए जो नए बच्चे हैं ये इनके लिए इशू होगा। ओके, के लिए थोड़ा सा रहेगा। हाँ, क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशनल है ना। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि क्या एक बोलना इनफ होता है या फिर एक प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए? टेक्निक्स, फर्स्टली यू आर गुड लिसनर। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं। बोल नहीं सकते। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी बात लाइक आप आए और आपने पार्टिसिपेट करा। इवन मैं भी आपको नहीं जानता, हाँ, राइट? तो बस मेरा आपसे यही है कि अगर आपको ऐसी टेक्निक सीखने का मौका मिले जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कंफर्ट से ऐसा कुछ सीख जाएं जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, इन्फ्लुएंसिंग हो जाएं, प्लस आपको बात करना आ जाए, आपको बहुत अच्छी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। जैसे आपने बोला आप कर सकते हो, बट उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, राइट? Definitely. उसकी एक टेक्निक होनी चाहिए, Obvious. राइट? सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आई डिजाइन समथिंग ऑफ माई ओन, जिसमें से एक चीज मैं आपको गिफ्ट दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा। उसमें 12 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में अप्लाई करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो, अपनी कन्वर्सेशंस को बेटर बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आप में से जो भी लाइक हूएवर इज देयर जिसको और अच्छे से सीखना होगा, राइट, उसको पर्सनली मैं कंसल्ट करूंगा। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग टू यू, इट्स समथिंग लाइक अ बोनस गिफ्ट फ्रॉम योर साइड प्लस अ 1-to-1 कंसल्टेशन फ्रॉम मी, तो विच यू कैन अप्लाई इन योर रियल लाइफ कन्वर्सेशंस। वेरी नाइस, राइट? और उसके साथ साथ आपको माइंडसेट बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उसी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस योर इंक्रीजिंग योर कम्युनिकेशन, राइट? आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, राइट, कि आप सीख रहे हो घर बैठे बैठे, प्लस आपको और वो प्लस बहुत ज्यादा ऐसे वैल्यू पे हो जो नो कॉस्ट है, तो क्या आपको लगेगा कि इससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा? बी का मात्र बिल्कुल आएगा, राइट? स्कूल तो आपको क्या लगता है, वो मुझे फ्री में देना चाहिए या उसके साथ एक कॉस्ट होनी चाहिए? कोर्स करनी चाहिए। पर्टिकुलर कॉस्ट। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तो जैसे ही प्राइस सुनते हैं ना पीछे हट जाते हैं। आप उनमें से हो? मनी इज ऑलवेज मैटर। ऐसा नहीं है, मतलब आई गोना प्रेजेंट समथिंग, तो आप अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करोगे, राइट? आप ऐसे इंसान हो। Required for a person that they never see the money or something like that. If it is not, अगर ये required होता है ना, if I'm required for something to build up my confidence, to build up my communication skills, then I'll be, very much interested in it. If I am not even interested in it, then I'll back off myself. तो अभी आपकी सिचुएशन क्या है? आपको लगता है ये चीजें मैटर करती हैं? It is matter in this generation because we are really much not comfortable to talk with each other. Actually in official life also. Because it is really important in retail marketing. It is really important to talk or how to communicate with your. तो आपको क्या लगता है ये चीजें इंपॉर्टेंट है? बहुत बिल्कुल। तो if you will get a opportunity to learn this thing, if it's not a very higher price, तो आपको लगेगा कि it's good for you? Depends. Okay. But you said that obviously yes, right? So there is a gift, as मैंने 12 टेक्निक्स आपको बोला था, तो वो मैं आपको वीडियो फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है? That is there. Plus that's not be enough. So I have designed a training plus a consultation part. That is only rupees, कितना होना चाहिए आपको? अगर कोई 1-to-1 गाइड कर रहा है तो ट्रेनिंग की फॉर्म में वीडियो दे रहा है और आपको 1 hour से 2 hours का कंटेंट मिल रहा है, जिसमें एक्यूरेटली बताया गया है कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, कैसे अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। आपको क्या लगता है? एक्चुअली डिपेंड्स कि हम लेना किससे चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट है को इंटेलेक्चुअली यू तो टच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, व्हाट आर रिक्वायर्ड है? इट्स अ सिंपल ट्रेनिंग जहाँ पे आपको मतलब शॉर्ट में 12 मिनट के अंदर 12 टेक्निक्स बताई जाएंगी,
वो आप सीख सकते हो। प्लस माइंडसेट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग होगी 1 आवर की, जो मैं ही दूंगा। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ओके, सो ज़्यादा मैं देर नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। लोग इसके 1000, 1500, 2000, 10,000 चार्ज करते हैं, बट इस सिंपल ट्रेनिंग का मैंने एक बोनस प्राइस डिसाइड करा है, जो मैं आपको एज अ गिफ्ट, वो 12 तो है ही, प्लस इसके साथ एक ट्रेनिंग दूंगा। दैट इज कॉस्ट ओनली ₹199, 199 रुपये। बट अगर आप इंस्टेंटली अभी एक्शन लेते हो तो मैं इसका 50% ऑफ आपको दूंगा। दैट इज फॉर 99 रुपीज। गुड सेल्स टेक्निक। Yes. I'm agree. तो 99 रुपीज की है, इसका एक्सेस मैं आपको अभी दे दूंगा एंड इसका एक्सेस मैं आपको अभी दे दूंगा, प्लस वो बोनस ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा। आई कैन पे यू 99 रुपीज फॉर दिस ओनली। Yes. नॉट इवन ट्रेनिंग। Did you say meet my client? ये भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। कौन वो इंसान है जो बैक ऑफ हो रहा है? कौन वो इंसान है जो आप कह रहा है कि मैं अपने वर्ड्स पे हूँ? It's not a very big amount, no? इट्स वेरी, तो यू आर इंटरेस्टेड राइट? Yeah, that ओके, सो आई विल गिव यू द एक्सेस। we are interesting कि आपके बच्चों ने क्या कॉन्वर्जेशन करी जो उन्हें मजा आया। हमें तो बहुत बात कथा होना पर तो लाइक यू आर इंटरेस्टेड राइट? 99 रुपीज यू, अरे बिल्कुल बिल्कुल, यू मैम एंड यू फॉर द ट्रेनिंग, यू 99 रुपीज। आपको तो बैक ऑफ बिल्कुल ही नहीं बनता। स्कैन ऐप कर देंगे। हाँ हाँ, मेरा पर्सनल नंबर भी मिलेगा। या तो यू आर ऑल्सो, आप तो बैक ऑफ नहीं होगे ना? 14 को एक मीटिंग भी चाहिए मेरी आपसे 2 घंटे की। मीटिंग चाहिए इस बारे में? हाँ ओके, तो लाइक his or her product, and I'm having this hibiscus tea, so I would like to call the tea people. All right, सर आप लेना चाहेंगे? And Mama Sarah gave me a product to fill the tea. So this is a hibiscus tea, and this is not a regular tea. This is different, and it reduces you. This is a herbal tea basically. Okay, where अबे इसमें से गुलाब की वो देखिए मेरे and you can also have a good wish for this year. सब जा रहा है। May your efforts lead to your success. So main spot of Delhi or Connaught Place, I will give you individual authority to go and approach to the people. But first of all, वो इंसान यहाँ पे प्रेजेंट करेगा वो क्या करने जा रहा है, और फिर उसके बाद वो उनकी टीम जाएगी, मैं साथ में जाऊंगा, बाकी लोग अपना एंजॉय करेंगे। Here I am, Simarpreet, standing before you to sell a product which is rose on behalf of my teammates. So I want to express you my views on a very special product which is a rose. Everyone symbolizes rose as in love, but I will symbolize as in an apology. Like if you are being hurted by someone, like he is done something to you, she is done something to you, just speak sorry. Just say sorry. I know that is a very difficult words to speak, but forgive and just give this rose with all your efforts and with all your heart and say sorry in front of that person. So it will embrace your love and the relation and the bond you have. So here is Yashika now. So as everyone know that rose is a symbol of love, purity, simplicity and joy. So rose has a very beautiful language. Rose has a very beautiful language that everyone can't speak. So rose has a very beautiful power to cherish any one moment, beautiful their heart and brighten someone's special day. Thank you. We have chosen red rose because it is the symbol of love. So you can give it to anybody like your family members. It is very good for any occasions like for marriage. So don't miss this chance, guys. Just give to your whoever you love, whether it could be your mother, whether you just give it to them and just express by just giving rose. Yeah. Thank you so much. Okay. Actually, we have a presentation and we have to sell these roses. So if you would like to purchase them, because we have a task given by sir, he's our sir. We are for Happiness Institution, Lakshmi Nagar, and we are here to represent ourselves on an English basis.
to develop our personality. So here we are. If you would love to buy these because we want to win this competition. So that's why we are selling this rose. Please. Would you love to please? Thank you so much. की तरह एक है Sir, ma'am, would you like to say something about what we did? Yeah, what we speak out for us? Okay, sure. This is basically for 60 rupees, but you can give up to extent to make us win. of camera. You know that purchase this watch and that review your love ones. You know. Only our sir given a task to sell this oath stranger. So if you buy, sir, I are laughing at the bag. If only win the task. Actually, we have a competition right now, and it is being initiated by Happiness Institution. He's our sir over there. He's standing there, and it's recording. If you don't mind to, it is recording. So actually. It is regarding our presentation skills towards our product evaluation. Means we got one product by sir and we are gonna sell it out up to an extent. Means the minimum price is for 60, but you can give up to extent to make us win. The point is to represent ourselves in English that I was very poor at it and I even don't know the basics for it. So I got up and I was an introvert, like, so I am extroverting, I am contacting with you. So this is his theme to make us win or make us interactive or develop our personalities as well. You can help by purchasing a flower. Interesting project which is on a product evaluation. It has been given by our sir, Abdullah sir. So here we are from the Happiness Institution, and he sent us to roam around and to sell a product to have a personality development or a sales skills to grown up. So if you would help us to buy this flower and we can win this competition, it's just for 80 rupees, but you can give up to maximum level you want to make us win. No, thank you. But have a nice evening. Actually, it is that we got a task from our sir. It is from an Happiness Institution. We are here to develop our sales skills and for our personality development. So we are here with our products, and sir told us everyone to just split in CP, and we are with our cameras to just see our sales skills and our personality, how it has been improved, because I was an introvert last month. So now I am getting through this. Why introvertism is wonderful. But why do you want to? It's what if I want to apply for an interview, I got hesitate from those. No. Well, who's the guy who's told you introvert is not the? Like your... He haven't told me. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕੋ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ में बोलना है मैंडेटरी फॉर पंजाबी ची बोला can Punjabi plus extrovertism first example is to tune into the other person. Yeah, so yeah, just I connected with you, so it's like we are ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਫॉर 80 ਰੁਪੀਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਬੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ 100% but the thing is ki if we will sell out we'll got a trophy for it. Do you want the trophy? ਹਾਂ why do you want the trophy? Everything as in ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਬਟ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਜੀ ਬੇਟੇ to make you win. ਹਾਂ ਚਲ ਕਵਿਦਾਸ What is my benefit? Exactly. That's the valid question. What your benefit would be? That's a valid. Like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਬਸ ਆਈ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਟ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਲੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਫਲਾਵਰ so what I feel like if you want one so we can. Okay, makes sense. I am spending $100. You're in that. I have the power to choose the cause and the person, and if I directly give it, and I can see maybe this little child having a nice smile after it, won't I choose that versus you sending me a picture and a pet? Yeah, How old are because you? Punjabi connect हो गया ना इसलिए you were like I'll buy that but I'll make sure कि extrovertness निकले. Unfortunate. No worry, but I say I know. thank you for the interaction although. This will be counted. Very good job. Thank you, sir. Thank you so much. This will be counted for. Only I come here and I convince this family to take a rose from me and they convince not easily but I tried. Well, cool. So I'll go. Yeah, that's good. And they convince and they give me 100 rupees for a one rose. Thank you. So we are gonna profit it by our product evaluation, but you're gonna profit it like our theme for the rose was to apologize someone, like for the sorry.
that it is a very difficult word to speak out. So they can have a chance for it. Exactly. But they were not convinced, by the way, right? So you got a failure. What did you do, Yashika? What did you say? I do nothing much, but I did nothing much, but I only convinced the whole family to I am from Happiness Institute, and sir giving me a task to sell this. Sir gave me a task to sell this rose to anyone. So you sold it in 100 rupees. 400 rupees. That's great. Congratulations. And I'm from Happiness Institute. Where are you from? I'm from Grace, but I'm really tired. Sorry. मैम जस्ट वी नीड योर 5 मिनट्स जस्ट। तो हम अभी एक कोर्स कर रहे हैं वैल्यू प्रोडक्शन कोर्स, जिसमें ना हम अपने हैंडमेड चीजें कम प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि ना ये सब मैंने खुद बनाया है, तो आप प्लीज इसमें से एक खरीद लो, तो मतलब मेरा कंपटीशन में मेरा हेल्प हो जाएगा। कितने का है? 30। 30 रुपीस का? हाँ। ठीक है, अभी बोल रहे हो अपना को। चेंज एक सेकंड, ये लीजिए आप। एक अब कुछ इवन और भी है, आप देख सकते हो, बट वो भगवान जी वाला है। अच्छा ये देखो भाई, तो इस चीज के लिए ध्यान वगैरह साउथ हैदराबाद तिरुपति बालाजी का जो है कि जैसे तिरुपति बालाजी साहेब बहुत काफी समय से बस आपका महाराज में चेहरा देखा है, बस 3-4 बातें बताना चाह रहे आपके। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। कैन बी टॉप फॉर 1 मिनट प्लीज? यस मैम, एक्चुअली मैं ना हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से हूँ। हमारी इंस्टीट्यूट ना कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती है। तो एक्चुअली आज हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, वैल्यू प्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसमें हम अपनी हैंडमेड चीज़ें एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट वी आर सेलिंग इट। तो मैम मैंने ना ये बनाया है खुद से, ये सब मेरा हैंडमेड है, और जस्ट फॉर 30 रुपीज इट इज। सो इफ यू कैन बाय इट, सो प्लीज इट विल हेल्प मी फॉर माई अपग्रेडेशन। नो मैम सॉरी मैम, प्लीज जस्ट फॉर 30 रुपीज यू कैन बाय इट। मैं ना हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह है। क्या है? सर मैं, हमारा इंस्टीट्यूट ना बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाता है, तो हम उस इंस्टीट्यूट से, तो आज हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है वैल्यू प्रोडक्शन, मतलब हम हमारी हैंडमेड चीजें एक लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने ना ये अपने हाथ से बनाया है सब, तो मतलब ये 20 रुपीज में आई वाज सेलिंग इट। वो आप खरीदेंगे प्लीज? हमको इसको मैं क्या करूंगा लेकर के? आप अपने बच्चों को दे देना। अरे बच्चे हमारा यहाँ है नहीं, बच्चे बड़े बड़े हो गए। Institute just taught every student about communication skill and speaking about that. So today we have a program of value production in which we are selling our handicraft products. So I have made it with my own self. Or that is only 20 for only, you can, if you can help me very. This is for 20? Yeah, 1 for 20. It's very pretty. Which you like, you can buy. Really? I can buy anything? Yeah, anyone. If you want to buy, so what are you going to do with the money? We are going, if I get good margin, then I will be the winner, and after that I will submit the money to my mentor. And what would the mentor do with the he will do good for us. You can check it on YouTube also, on Google. Like, what is the institution again about? Happiness Institute. Is it all about personality development? Personality. Yeah, exactly. So is it? Yeah, exactly. That was a project going happy. Okay, you'll be happy that you discovered it. Okay. Or this time. So you're selling this for 20. What if we get a margin? What happens then? I will get the prize. I will be the winner for today. Okay, so you want to win a prize? Yeah. Okay, I get it. So I'll just take these two. I can pay on you, right? Yeah, sure. Show me a stamp test. But then I'm not at so giving you away. Thank you so much. Margin? हाँ बेटा, हाँ, एक्चुअली हम हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से हूँ मैं। क्या चीज? हैप्पीनेस ये हमारे जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश बोलना और पर्सनालिटी डेवलप करना सिखाते हैं हमारे सर वहाँ पे। तो हमारा क्या है ये? लक्ष्मी नगर में इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है। अच्छा, कोचिंग है। हाँ जी, तो वहाँ पे तो हम वहीं से आए हैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम अपने हाथ से बनाई हुई चीजें सेल कर रहे हैं एक स्मॉल प्राइस पे। तो ये सब ना, मतलब 2-3 चीजें तो मैं सेल कर चुकी हूँ, ये दोनों भी मैंने खुद से ही बनाया है अपने हाथों से, और सिर्फ 20 रुपीज इसका प्राइस है। अच्छी। तो अगर आप खरीदना चाहे तो Follow your dreams that know the way. ये क्या? Dreams ड्रीम्स दे नो द वे। know the way. More lovely, me love me. कि आपके बिना हाथ से बनाए। जी तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, इसका प्राइस है मात्र
₹20 और आप ये सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों को जो लोग जिन लोगों को जैसे स्ट्रीट्स पे लोग होते बच्चे होते हैं या जो लोग स्कूल नहीं जा पाते उन लोगों के लिए ये इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है जो जिनका ऑफिस ना लक्ष्मी नगर में है। किस तरह के बच्चों को सिखाते हैं आप लोग? हम हर टाइप किस वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट का बच्चा वहाँ आ सकता है कोई भी एज लिमिट का वहां आ सकता है और उसके बाद आप अपने ऑनलाइन प्रमोशन भी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर और इसकी मात्र वैल्यू ऑफ ₹20 है। आपका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर हाँ वो ऑनलाइन जाएगा ना आपका नंबर तो ऑनलाइन देगा 9795 हाँ 62 अरे आपको अपना नंबर नहीं पता इंस्टीट्यूट का नंबर याद नहीं इंस्टीट्यूट आप यहाँ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इंस्टीट्यूट बेच रहा है बट मैं हूँ तो आई वाज विद द इंस्टीट्यूट नहीं you are with the institute I know very well but you are selling the product you are promoting the institute now yeah exactly so that's why I'm asking you it's an online sale yes I so why are you not selling the online also no that's not an online sale that was a program that's why I'm asking you this is also a part of the program na I'm also doing same like this yeah I know I'm what चल go to this ये जो आपको मैंने तरीका बताया this is the best way online selling so you can do like this okay thank you so much actually here's the mentor of ours and a program is going on that value production so we are selling our handicraft products I have made this by my own and it is only 20 rupees cost if you can buy it then that will help me so much Okay, no thank you. I would love it again. okay thank you so much A very good evening, Mr. Abdullah sir and my dear friends. First of all, I would like to pay my deepest gratitude to Mr. Abdullah sir who has given us such a golden opportunity to enhance my communication skill and to be the part of this project. So, I'm standing here and I'm going to present my product which is the band of Khatu Syam. This is not a band, it's a blessing of Lord Khatu Syam. So, every person having a problem in their life, not a single person who doesn't have a problem in their life. So, someone having a problem related to financial issue, someone having a problem related to career issue, someone having a problem related to relationship. Okay, but this band is going to change your life. This band will change your life. Trust me, my dear friend, this band will change your life because it's not just a band, it's the blessing of Khatu Syam. It comes from the Khatu Syam temple which is located in Jaipur. And we also know Jaipur is also known as the Pink City. So, it's my personal experience. I also wearing this band. You can see this. I'm also wearing this band. After the wearing this band, I got my all the achievement which I have decided. And trust me, my dear friend, if you wear this band by the bottom of your heart, this band will remove all the negativity from your life. This band is going to remove all the problem in your life. So I'm not selling this. I'm selling this band not for the profit making. It just I'm selling this just for the solving the problem of the humans, of the people, because it's the miracle product which comes from the Lord Khatu Syam. Thank you. Minutes is the ना. Sorry. नहीं चाहिए. I'm not a salesman. I'm just it is a task which is given by our sir. I am from Happiness Institute which is located in Lakshmi Nagar. Can I explain? Sir, it's a band. You know, sir, every person having a problem in their life. And sir, what's your name? Can I profess Naresh? No. Naresh. Sir, have you ever visited Khatu Syam? You know what's the history of Khatu Syam? 3-4 times. Yeah. Yes. I know. You know what's the history of Khatu Syam? It's comes from the Mahabharata. So that's why I'm like this class which is given by our sir. I'm the student of Happiness Institute. The task is convince the people and sell any product. But I thought, why I'm not selling those products which going to helpful to the people. That's why I'm selling this product. I'm not a salesman. And I also not selling this for the profit making. I'm just sell for the cost to cost price. Can you buy this? How much cost? Just for 40 rupees. Just cost to cost. It's a task for me. And sir given a task to convince the people.
इन्वेस्ट ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू बस बस बेचने कन्विंस करने पीपल को कन्विंस करना कि कैसे आप कन्विंस कर सकते हो बस ये आपका So here we are going out to a project which is value production, where we are selling our handicraft product on a very minimal price. So I have made it by my own, and that is cost only 250. 20. Okay. So if you want to buy it, thank you. And हमारा institute is working for a personality development communication. So हमारे यहाँ पे एक program चल रहा है where we are selling our handicraft product on a very minimal price. So I have made this by my own. So it is only cost for 20. If you can buy it, then it will help me so much. Whatever you want to. हाँ तो दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है अरे एक मिनट तो फिर नहीं लूंगी आप ही लोगे अरे कोई बात नहीं क्या मेरा नुकसान करा रहे हो मैं जीत रही हूँ आप फालतू मुझे हरवाना चाह रहे हो क्या नहीं यार आपको पैसे ही मतलब है ना मुझे पैसे हम सब एक ही हैं। कोई भी कर दो फिर आपकी करो भाई करो। It's all on you. हम करें। ओके Thank you so much. Thank you so much. I'm a student for Happiness Institute, and the institute is about speaking English course and the personality development. And I'm a student, and our mentor give a task to me that is convince to the people and sell any product. And sir, I have a product which is the band. Okay, it's a band. It's just a band. And sir, I'm not selling for the profit making. I'm just selling to the cost price. Because it's a task which is given by our sir, and just I'm selling this. And sir, it's a band. The benefit of this band is a very powerful band. Okay, it's remove your all the negativity of your life. It's also help to remove the problem of your life. Sir, can you? No such thing which is made by a man and they will solve the problem. No, sir, because it's come from the Lord. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. How Lord came to the earth and give this to the people and It's just a thinking, sir. It just Oh yes, your thinking can be. yeah. Ours is not. Okay, thank you so much. Glad to meet you. Good evening, sir. Good evening. What's your good name? Mahesh. And your ma'am? Himani. Okay, so actually, I'm the student of Happiness Institute, and our institute is for personality development, English speaking, communication skills. So here we are conducting a program of value production. So here's my product, and it is just cost of 100 rupees. So can you buy it for her to make her day special? This is a horse. We have completed today 8 years. Oh, congratulations. Appreciate you. So you have to buy it definitely, Pon. Yes, of course. Can we pay first? No, you have just give it to her. पूछ जाएगी इसलिए कह रही हूँ मैं हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट से उठ गया पता है हमारे इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है तो वैल्यू प्रोडक्शन तो मैं ना हैंडमेड है ये मैंने खुद बनाया है तो मैं इसको सेट कर रही 30 रुपीज का ले ले बहन प्लीज ला दी यार चल दे देना Project valuation winner, right? So that's great. So I think it's for the people who actually gained values. Hope that you all tried well. It was amazing. सब लोगों ने अच्छा ट्राई किया? Yes, sir. बहुत अच्छा ट्राई किया. Mandeep, you tried well. अच्छा ट्राई किया. At least you sold to Abdur Rahman. That's fantastic. Not an issue, right? So you tried well. It was amazing overall, I can say. And it was fantastic. And then I will come to just, Parth, you also tried well. Congratulations. Sorry, Manav, you tried well. Congratulations. Parth, you also tried well. Congratulations. Simran, you also tried well, I think, right? Today you will go with 250 or 300 rupees. 280. 280. You will go back to your home and you will say, Mama, those was see, right? And that was amazing. But yes. And I especially liked your presentation, Atulya. It was amazing, by the way, right? The way you actually, presented yourself, it was amazing. कि किस तरीके से उनको आपने हुक किया वो मुझसे भी अच्छा था दैट वाज बेटर देन मी सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड एक्चुअली एंड अनदर पॉइंट इज लाइक आई कैन से दैट सिमर ट्राइड वेल सिमर तो मेरी आंखों के सामने ट्राई किया तो शी गॉट मेनी टाइम्स रिजेक्शंस एंड ऑल एंड शी गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम
one of the couple. No, not couple. Actually, one of the. No, sorry, not one of the couple. Yes, maybe father and sister and daughter. And when I tested, I think that's one of the best tests I have ever tested in my entire life, and that was amazing. Ronak, you tried well. Radha, you also tried well. That's nice. Khushbu, you tried well. Everybody, Abdul Rahman, you tried well. Naeem Saab, you tried well. Abhishek, you tried well. Alok, you tried well. Altamash, you tried well. Yashika, you tried well, right? You know. Vidya, you tried well. Priya, you're writing your own quotations, right? But जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्लस प्राइस, इसमें साफ साफ लिखा है प्रोजेक्ट वैल्यूएशन. प्रोजेक्ट वैल्यूएशन मतलब जो प्रोजेक्ट आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आपने क्या निर्धारित की है. अगर आपने सही निर्धारित की है, उससे ज्यादा निर्धारित की है, so you will be getting this trophy. I will ask to you, what was the cost behind your project? What was the cost behind your project? Okay. Yeah. So particularly if I talk about my project, that it was based on my experiences, the things I learned in my life regarding confidence building and communication. I structured that thing and presented in a particular module and recorded the videos. Presently, मैंने sessions भी लिए थे, तो वो recordings भी मैंने वहाँ डाली. Plus I recorded some more things and just structured in a module and just the value. And So what was the cost of the project actually? What was the how much cost was there? cost was of my time, and second thing was the panel cost. Panel cost. So how much for one? Like 14 rupees for one. 14 rupees for one. And how much you received in back? Sir, 100 rupees. You received 100 rupees. Times 100 rupees. Two. And one I will receive. All right. Okay, Priya. She was monitoring. Okay. So I just want to know that why did you plan for this tea and what was the reason behind this and how much was the cost of the tea actually? सो सर हमारा ये जो प्लान था हमारे टीम मेंबर्स के बीच में हुआ था. वी आर प्लान्ड टू हिबिस्कस टी. इट वुड बी डिफरेंट, यूनिक एंड सो कॉस्टिंग हमारी 2 रुपीज फॉर द कप एंड 2 Rupees on the tea. 2 rupees for the tea. 2 rupees on the cup, 2 rupees on the tea. How much you charged for that? 50 rupees per cup. 50 rupees. All right. 100 rupees. How much you received? How much they received? Overall? 50. Okay. 250. 250. All right. Single criteria was there. Other criterias were also there. That how you present, how you just, convince the people. But the criterias were main that cost, price. Cost, price. That's why I'm asking the cost and the price. Yeah. The difference between and gap between cost and price. Don't mind it. I would like to present this trophy, ladies and gentlemen, to the biggest prize and least cost and least cost. And this prize is being presented to. Please give a round of applause for Hibiscus Tea Team, ladies and gentlemen.